Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, seventh question. A dome of a building is in the form of a hemisphere. एक dome है building का, वो hemisphere की form में है. From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. Inside whitewashing की cost हमें given है, and rate है rupees 2 per square meter. Fine. So you have to find the inside surface area of the dome and the volume of air inside the dome. Fine. So first of all, the cost of whitewashing it from the inside, it is given to us already. So the cost of whitewashing is rupees 498.96. Okay, and the rate is also given to us, and आपको पता है cost is equal to rate multiplied by the area, and the rate of whitewashing the inside of the dome is equal to rupees 2 per meter square. अब हमें उससे क्या करना है, इनर सरफेस एरिया निकालना है. So first part is inner surface area, which is equal to 498.96 divided by 2, which is 249.48 meter square. Now the second part says the volume of the air inside the dome. ये हमें निकालना है. एंड अगर एक हेमिस्फेयर हमें गिवन है, तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू 22/7 आर क्यूब, विच इज इक्वल टू, नाउ अब 2/3 इंटू 22/7 इसका वॉल्यूम का जो है फॉर्मूला होता है. इससे हम आर नहीं निकाल सकते, तो हम सरफेस एरिया से आर निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 6.3 मीटर. नाउ द वॉल्यूम ऑफ बेस, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर हम लगाएं, इट इज 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 होल क्यूब, which is ultimately equal to 523.90 meter cube approximately.